हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक GUI बेस्ड म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के बारे में। द होल एप्लीकेशन इज डिजाइंड यूजिंग Tkinter मॉड्यूल। सो लेट अस सी हाउ एग्जैक्टली दिस लुक्स लाइक। So this is how this application looks like. Now let us see the whole functionality of this application. मैं जा रहा हूँ मेन्यू पर एंड मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ सॉन्ग्स यहाँ पर। Let me add all these songs जो मैंने YouTube से डाउनलोड किए हैं. All of them are copyright free. Let me select this one and let me play this. Losing time, I'm fading fast. Next. Previous. Pause. Resume. Stop. Select. Play. Stop. So guys, that's the whole functionality of this application. Now without wasting any time, let us start building this project. So guys, here I am on my Pygame IDE. Now let us quickly import Tkinter here, and from Tkinter, let us import file dialog. Now let us initialize our main window using tk function, and let us assign it in a variable named root. Now let us set the title to MP3 player. Now let us call our main loop and let us try to run this program. So here this is our main window guys. Now let us come back और अब बना लेते हैं कुछ buttons using button keyword. Let us place it on root. Let the text on this button be play, font be Arial, and width of this button be 7. Now let us store this button in a variable named play_btn. Now let us grade this button at row equals to 1 and column equals to 0. Now let us just copy this button and let me paste it here. Now let the name of this button be pause_btn and let me change the text to pause. Let us initialize it on column equals to 1. Now let us come here and change its name to pause. Let this be a stop button. Stop. Let the text be stop as well and let us place it at column equals to 2. Let this one be resume button. Resume. Let text be resume as well and let us place it at column equals to 3. Let this be previous button. Let it be previous. Previous. Let the column be 4. Let this button be next button at column equals to 5. Let us change the variable name to next_btn and let us change it here as well. Now let us just run it. So this is the output we are getting guys. Here are all of those buttons. Now let us make a menu using menu keyword. Let us place it on root and let us store it in a variable named my_menu. Now let us configure menu equals to my_menu. Now let us make one more menu and let us place it on our previous menu and let us assign it in a variable named add song menu. Now on our new menu, let us create a label named add songs. Now guys, label के बारे में भी हमने अपनी previous videos में बात की है. It is a widget which allows us to write text on our application which cannot be edited by user. Now let me just copy this and paste it here and let us change this label to delete songs. Now let us just run it. So here this is our menu with add songs and delete songs. Now guys, let us come back here and let us add one more widget named list box.
Now guys, list box is a widget which is used to display list to our user. Let us place it on root. Let its background be black, foreground be white, font be Arial, and size be 15. Let its height be 12 while width be 47. Now let us set our select mode to single, which means it will select only one item at a time. Now let us set the select background color to gray and select foreground be black. Now guys, it means the selected background will be with gray background and black foreground. Let us initialize it in a variable named song underscore list. Let us just grid it as well. Now let us just run it. Now guys, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जस्ट प्ले बटन इस लिस्ट बॉक्स के नीचे है और बाकी सारे बटन्स यहाँ अलग हैं. That is because by default list is at row 0 and column 0 and display button at row 1 column 0 और यहाँ से column 1, column 2, column 3, column 4 और column 5 स्टार्ट होते हैं. Now if we want कि हमारे सारे बटन्स इस लिस्ट बॉक्स के नीचे आए तो लिस्ट वाले 0th कॉलम को हमें सब कॉलम्स में डिवाइड करना होगा. And for that we have to write column span equals to number of sub columns we want. Now हमारे पास 6 buttons हैं, so we want 6 sub columns. अब इसे रन करके देखते हैं. So that's the complete interface of this application, guys. Now let us start working on its backend. And for that we have to import Mixer from Pygame module. Let us initialize it. Now let us come down and let us define a function named play. यहाँ पर ले लेते हैं एक वेरिएबल नेम song and let us store our song list here. Now with the help of mixer module we will load songs और अब mixer module की help से ही we will play them. Now let us define one more function named pause and हम अपने म्यूजिक को pause भी mixer function की help से ही करेंगे. So for that we have to write mixer.music.pause. अब बना लेते हैं एक और फंक्शन नेम resume. अगेन म्यूजिक को रिज्यूम करने के लिए भी हम लोग मिक्सर फंक्शन का यूज करेंगे एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट mixer.music.unpause. नाउ लेट अस डिफाइन वन मोर फंक्शन फॉर स्टॉप एंड म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए हमें लिखना होगा mixer.music.stop. नाउ लेट अस कम डाउन टू आवर बटन्स. लेट अस पास अ कमांड play. For pause button let the command be pause. For stop let it be stop and for resume let the command be resume. Now guys, in Tkinter command का हम लोग यूज करते हैं अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए. Now let us just go back above और यहाँ पर हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं नेम previous. Now यहाँ पर ले लेते हैं एक वेरिएबल नेम p_1 और इसमें मैं स्टोर करूंगा currently selected song को. Now मैं इसी वेरिएबल के इंडेक्स से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा सो दैट हम लोग अपने प्रीवियस सॉन्ग पर जा पाए और मैं इसे p_1 में ही सेव कर रहा हूं. नाउ लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल नेम temp और इसमें मैं न्यूली सेलेक्टेड सॉन्ग को स्टोर करूंगा. नाउ न्यूली सेलेक्टेड मींस प्रीवियस बटन क्लिक करने के बाद जो मेरा नया सॉन्ग सेलेक्ट होगा. नाउ इफ यू वांट कि हमारा प्रीवियसली सेलेक्टेड सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए तो उसके लिए हमें उसे करना होगा लोड और अब हम करेंगे उसे प्ले. Now if you don't want to play it automatically you can skip these 2 lines. Now लिस्ट से प्रीवियस सिलेक्शन को करते हैं clear and let us activate our new list and now let us just select this one. Now let me just copy this whole function और मैं इसे कर रहा हूं यहाँ paste. Let its name be next. Let this variable be n_1. Same here. Let the index be +1. Let us just change this here as well. Here and here as well. We need to change it here
Now let us just change this variable name from temp to temp2 and same here as well. Now let us just come back down, and for previous let us pass a command previous, and for next we need to call here next. Now let's go back above and यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं नेम add. Now मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल नेम temp underscore song और यहाँ पर मैं लिखूंगा file dialog dot ask open file name. Now let us write a title, choose a song, and for file type let us write mp3 files. Now this mp3 files will be shown to user, जिससे user को पता चलेगा that we can only import mp3 files here. Now let us just choose a file with any name and .mp3 extension. अब यहाँ पर करते हैं एक for loop run और songs.list में हम लोग insert कर देंगे हमारे songs को. Now let us just define one more function named delete, and from our song list let us just choose the currently selected song and let us place it in a variable. Now from our list let us delete our current song. अब आ जाते हैं नीचे, and for add songs let us pass a command add, and for delete let us pass the command name delete. अब इसे रन करके देखते हैं. So here is the output we are getting, guys. Now let me just add few songs here. So if you can see, I am unable to add more than one song, and if you want to add more than one song, then just come back here and instead of ask open file name write ask open file names, and instead of file type let it be file types. Now run it again, and now we can add more than one song at a time. Now let us just choose this one and click on play. Let us go to next, previous, pause, resume. So that's it from this project, guys. I hope you liked the video, and if you do, kindly give it a thumbs up and forgot not to subscribe to our channel. And if you have any doubt related to this project, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in description box. Also check description box for the source code of this project. Thank you.